Hey all, Ankit Kishore this side from Stierfleet team and welcome back to my channel. So today was FinNifty expiry, okay. But this video I'm not making for FinNifty expiry. मैं यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ मंथली एक्सपायरी के लिए बना रहा हूँ. Actually I was not well and that's why I'm recording this monthly expiry video after too late. So मैं आज जा करके इस वीडियो को अपलोड करूँगा या फिर मे भी कल करूँगा. But as today was FinNifty expiry also, so I will give a summary explanation of how it went. Okay, so let's start this FinNifty expiry summary. देन उसके बाद फिर मंथली एक्सपायरी के बारे में बताऊंगा व्हाट ऑल हैपेंड इन नॉर्मल सीरीज एंड हाउ आई ट्रेडेड इन नॉर्मल सीरीज. ओके, सो डायरेक्टली जंपिंग ऑन दिस चार्ट, बट बिफोर दैट क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ मैं वो बता देता हूँ. सो इन दिस मेन जीरोधा अकाउंट आई मेड 21K प्रॉफिट. ओके, इन द सेकंड मेन अकाउंट आई मेड I made total 26K profit. And why it is 26K, why it is not break even? Because अगर आप हर अकाउंट को देखोगे, शायद या फिर ये अकाउंट हो या फिर ये. ओके, सो आई हैव टेकन अ कवर्ड कॉल as market was up, so I took a covered call and I know it is bleeding, no doubt it is bleeding 56K, but at the same time if you see my holding, it has gained quite a lot. So I'm up almost 21% for this year, because last year obviously I will make yearly video also, and on that video obviously I will say कि मैंने किस तरीके से क्या मैनेज किया, किस तरीके ट्रेड किया और क्या मैंने रिटर्न बनाया, बीट whether it is trading or whether it is investment. So on investment if you see, so I have gained quite a lot, and after that when market breached 2200, then only 2300 actually, then only I took this covered call because it was all time high, almost all time high. तो वहाँ पे मैंने इस covered call को लिया and then it started bleeding and it is showing wrong figure. Why? Because by mistake this also got a squared off today. Okay, और मेरे को इसे re-enter करना पड़ा and because of that it is showing this average, but otherwise my average is 180 I guess. Okay, 180 is the average here and here the average is 250 because मैंने इस अकाउंट में लिया जब 2500 क्रॉस हुआ. ओके, तब मैंने जाकर लिया, तो यहाँ पे मेरा एवरेज कुछ 300 के आसपास का है. एंड इन माई थर्ड अकाउंट, दैट इज दिस स्मॉल अकाउंट, सो हियर again this has gained a lot, and all this profit, this almost 6.5% profit came in the last 1.5 month only. Okay, 1.5 2 month, क्योंकि उससे पहले मैंने मेरा ये अकाउंट में पैसे नहीं थे, किसी और अकाउंट में थे, वहाँ से मैंने पूरे को स्विच किया एंड इस अकाउंट में आया. तो उस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट था इन इन्वेस्टमेंट आई हैड टू बुक इट. ओके, बिकॉज आई वांटेड टू स्विच ऑल द अमाउंट टू माई पर्सनल अकाउंट एंड बिकॉज दिस इज अ स्मॉल अकाउंट, इट इज अ मोर और लेस एक्सपेरिमेंटल अकाउंट फॉर मी. सो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके ट्रेड किया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6.5% का रिटर्न है, बट एट द सेम टाइम कवर्ड कॉल इज ब्लीडिंग हियर ऑल्सो एंड ऑलमोस्ट 70K लॉस it is giving. But the time when I purchased this covered call, that point of time it was having 1.35 lakh rupees profit. It was showing 1.35. So after that it has gained almost 1.45 lakh, means 1.5 lakh. Okay, and as against it I am losing almost 70K. So yeah, more or less holding is gaining quite a lot, but it is giving a loss, a decent loss. But so ये covered call explain मैंने क्यों किया, because you might be having that confusion that it is showing some other profit and I am saying something else. So that's the reason. So again, today's profit in FinNifty expiry is 21K here, 26K here, and almost 3-4K here, means break even you can take here. So more or less altogether 48-49K profit in FinNifty expiry. Now how it went? So initially in the first 1.5 hour मार्केट ने सब कुछ शो कर दिया. बिट अप मूव, डाउन मूव, 5x 10x प्रीमियम मूवमेंट, मीन्स द गामा एंड IV एक्सप्लोजन दैट हैपेंड, it was way too severe. Okay, but this account here I was up almost 20K till this point. I didn't take any hit और यहाँ से मैंने उसे कट कर लिया था. उसके बाद I thought because tomorrow is Bank Nifty expiry and there is a decent premium in there, so I thought I will take entry here, and these two candle only from 20K positive I came down to 24K negative in Bank Nifty, and after that I managed something and then closing here with 3-4K positive. So decent outcome considering the way market moved. It was horrible movement. After that Bank Nifty premium went down like hell, but I didn't participate in that decay. Reason for that, क्योंकि मेरा बहुत एक लॉस हो रखा था एंड आई वेंट कंजर्वेटिव, पूरा का पूरा कंजर्वेटिव हो गया था मैं, क्योंकि मेरे को वहाँ से सिर्फ लॉस को कम करना था. एंड माई SL फॉर द डे इन हियर वॉज ऑलमोस्ट 35-36K. तो अनदर 10K इज वॉट लेफ्ट. तो अगर मैं वहाँ से अग्रेसिव किया होता ट्रेडिंग तो वो हिट होने में भी टाइम नहीं लगता. बट आफ्टर दैट मार्केट पिंड इन द सेकंड हाफ, मार्केट वॉज वे टू साइलेंट, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा डीके हुआ. सो this was more or less a summary. So here I managed not to get any hit in any of the account, but thoda bahut hit mila, because like in main account individually I was up 20K till here, but in this up move
ओके एंड आफ्टर दैट इन दिस डाउन मूव ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग ऑल दिस मूवमेंट, तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ब्रेक इवन में आ गया था 20K से, ईच अकाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके देन वी स्लोली रिकवर्ड एंड स्लोली आई पार्टिसिपेटेड इन द डीके एंड collected decent decay. So on 50 lakh account, because I use 50 lakh margin, don't see this 54, because out of these 52 53 3.5 lakh is blocked in this uh, covered call position. Okay, so more or less 0.4% profit for the day in main accounts. Now this was the summary about Finifty expiry. Now I'm jumping directly to the profit and loss that I made in November series. Okay, although I made a Excel sheet, you know, if you're following me, so you know I'm making this Excel sheet right from the beginning of this financial year. So it is having everything, all the details, means all the journals where I made big losses, what is the maximum DD each month or for a given period of time. Everything is here, everything is recorded in this Excel sheet, and you can take a screenshot also of each month, because I'm making monthly statement video from the last 2 years. Okay, but this Excel is having data of this financial year. So each and every month I made monthly statement video, right? So you must have, if you will take a screenshot, so you will get to know how I traded in any particular day and what was the journal in that day. Everything is here. So okay, so मैं उस पे भी explain करूँगा, but उससे पहले I'm just showing here कि मैंने क्या profit and loss किया in all 3 accounts. So here it is showing 71K profit. This is graph, and on net term it is 27K profit. I'm just covering this in ASAP, and उसके बाद मैं इस Excel पे explain करूँगा. And the second account I made 1.3 lakh profit, and after charges it is 92K profit. So more or less 2% profit in this account and 0.5% profit in this account. Okay, I'm talking about net term, and on gross term 71K profit here and 1.3 lakh profit here, altogether 2 lakh profit. So 2% profit on gross term, and on net term it is 2 and 2.25%. Okay, so this is more or less the summary about the gross and net profit in main account. I'm talking about this third account. So here I performed really well, leaving one day, because on that day I did blunder. Okay, and that actually I had to pay huge price for that. मैं वो भी आपको explain करता हूँ. See, this is the month, and in this particular day I had to book 58K loss, and including charges it is way too much. It is like 64K loss, which is like 1.5%, 1.6% loss on the margin that I'm using. So it is showing 46 for something, but again 3-4 lakh is blocked here. So 41-42 lakh is what I'm using here. So on 41 lakh rupees I made a gross profit of 1.85 lakh and net profit of 1.28 lakh, means 1.3 lakh you can take. So this is more or less the summary. Now I'm going to explain each and every bit about it. मैं सब कुछ explain करूँगा on this Excel sheet. Okay, and this will make easy for you to understand everything, because everything is here, everything is written here of all 3 accounts. सब कुछ है यहाँ पे पहले से, और मैं अगर individually हर तीनों account को explain करूँगा तो it might be difficult for you to understand and it will be complicated for you, right? So यहाँ पे अगर आप देखोगे, so this from here to here, okay, this is द जर्नल ऑफ माई मेन अकाउंट्स. स्मॉल अकाउंट का मैं जर्नल नहीं देता. रीजन फॉर दैट इज क्योंकि उसमें बहुत एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स भी मैं करता हूँ. ओके, जब मैं उसमें एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स बंद करूँगा, उसे भी मैं इसमें पूरा का पूरा कॉपी में डाल दूंगा, तो उसका भी पूरा जर्नी यहीं पे, पूरा जर्नल मैं यहीं पे करूँगा. ओके, बट एज ऑफ नाउ एज आई एम डूइंग सम एक्सपेरिमेंटल ट्रेड इन दिस स्मॉल अकाउंट ऑल्सो, सो इसलिए इसे मैं इंडिविजुअली दिखा रहा हूँ. ओके, दिस इज द रीजन वाई आई एम शोइंग इट इंडिविजुअली. नाउ talking about here, so if you'll talk about the maximum DD that I touched this month was on this particular day. Okay, so this is a DD, max DD from the highest equity curve. Okay, not on any particular day. On any particular day the maximum loss I took was 0.88%, and this is way too much. Okay, and the worst thing is total 3 losses I took. This 10K is also a loss, so I'm just okay, putting it this way. So this 10K loss is a small loss, so that's why I'm not considering it, because loss is part of business. But why I'm considering these 2 losses? Because see, for me and the kind of trades I do, okay, if you're following me, you know me, that I'm a very risk averse person. I'm a very conservative trader, and for me any loss more than 0.5% loss is a big loss. Okay, and here if you'll see, in total number of 3 loss days are here. One is okays, and these 2 are big losses. 0.8% loss, 0.9% loss, almost 0.72% loss. These are big losses for me, and believe me, out of these losses, okay, almost 80% loss came in the last 1 hour. Okay, and the worst thing is here it is Thursday, that is Nifty expiry. But other than this, if you'll see any other account, the losses, the biggest loss that I'm taking is on Tuesday. Okay, Tuesday is not going good for me at all. Okay, from the last few months, and that's the reason I have decided that I have made some tweaks in my system for Tuesday, और मैं उसे उस तरीके से ही अब ट्रेड करूंगा. उसमें मेरा रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम है. ऑन अ ट्यूजडे मैं 25-30K का मैक्स पर अकाउंट का लॉस लूंगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं है. और थोड़ा बहुत ट्विक और किया तो हो सकता है मैं रिस्क एपेटाइट बढ़ा दूँ, बट फॉर टाइम बिंग दिस इज वॉट आई हैव planned. Okay, this is for Tuesday. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, it was very bad day. Reason for that was few wrong decisions I took, and at the same time
मैंने एंड में, मैंने अभी जैसे आपको बताया, आउट ऑफ दीज 2 लॉसेज 90%, 80 to 90% loss came in the last 1 hour, and that was a worrisome matter for me. Why? Because see, I'm a non-directional trader, और मेरे लिए अगेंस्ट में प्रीमियम होना जरूरी है. अगर अभी कभी आईवी स्पाइक हो रहा है या गांव मूव हो रहा है, आप थोड़ा हिट लोगे, बट यू विल रिकवर ऑल्सो, बिकॉज आईवी स्पाइक हो रहा है वो कूल ऑफ होगा. बट इन द लास्ट 30 मिनट्स इफ सम मूव हैपेंस, देयर विल बी सम गामा, नो डाउट अबाउट इट. अगर थोड़ा मूवमेंट आएगा गामा होगा, बट अगर उस गामा, अगर वो मूव गामा जो है वो कन्वर्ट हो गया एक अच्छे डेल्टा मूव में, यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू बुक द लॉस. Okay, that's the thing, that's the worst part, because you are not having any premium in the against side to collect something. Okay, I hope I'm making some sense to you. Otherwise मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में तो ये बता, एक्सपायरी वीडियोस में मैं बताता हूँ मैंने किस तरीके से ट्रेड किया पर्टिकुलर डे में. अगर इसका वीडियो मैंने बनाया होगा तो उस पर भी आप देख पाओगे. गो एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट टू सी हाउ आई मैनेज, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई आई बुक दिस लॉस. Okay, this you have to see. Whatever lost days I book, I made video on, you do watch them and you will get to see कहाँ मैं लॉस कर रहा हूँ, जिसे आप देखकर कुछ सीख सकते हो और फिर वहाँ से आप you can implement that और वो शायद आपको हेल्प करे. Okay, this is about it, about the losses. Now on gross term, I'm just giving summary again. On gross term, total profit that I booked was 2,01,000, which is 2%. On net term, this is about main account by the way. Okay, on net term it is 1.2 lakh profit. Okay, that is 1.2%. Okay, this is about main account. A small account did fairly well, no doubt about it. Okay, so here I booked 1.85 lakh, which is 4.7%, 4.6% you can take in gross term, and net term 1.28 lakh, which is 3.2%. So this is a decent outcome. Anything above 2.5% is a decent outcome for me, because again I'm repeating the same line, as I'm a conservative trader. For me, any return more than 2.5% is a big return. Okay, because I keep nothing, more or less nothing at a risk. Okay, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ. 1% का हिट इज द मैक्सिमम आई कैन टेक इन अ डे. ओके, और उसे भी मैं कम किए जा रहा हूँ, बट 1% मोर और लेस इज here for time being, but उसके बाद हो सकता है मैं कुछ और ट्रिक्स के साथ उसे और कम करूँ. Okay, this is also in the plan, but as of now I'm going this way. So this is about a small account, this is about main account. All together in November, the total capital that I used was 1.4 lakh, sorry 1.4 CR. Out of it 1 CR is in main account and 40 lakh in a small account. So the total gross profit that I made is 3.87 lakh, जो कि होता है 2.7%, 2.75% in gross term, and net term 2.47 lakh profit is what I made, and percentage is 1.77%. Okay, so this is about the November series, and here at the same time मैं यहाँ पे ये ओवरऑल इस ईयर का, एक सेकेंड, इस ईयर का मैं पूरा PnL भी बना रहा हूँ कि अभी तक का क्या रिटर्न है. तो टोटल रिटर्न दैट आई मेड इज 16.5%. दिस इज ऑन नेट टर्म. ग्रॉस में ये काफ़ी ज़्यादा है, बट द चार्ज नाउ व्हाई आई एम शोइंग दिस, बिकॉज ऑफ द चार्जेस. I know you have to calculate these charges, the ratio of it on the capital, what capital I use, and on that capital what is the charge I'm paying. So if you see, charges has increased quite a lot. Okay, like this month I paid almost not almost exactly 1% as charges only. Okay, which is way too much for me. तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ कि फिर से मैं उसे कम करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ऑल्सो दिस हैपेंड. मैं थोड़ा ज़्यादा चार्जेस पे कर रहा था, देन आई फिगर आउट समथिंग, आई मेड सम ट्विक्स एंड देन चार्जेस वेंट डाउन ड्रास्टिकली. और अभी फिर से वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. जैसे यहाँ पे ये काफ़ी इंक्रीज हो 70K 75K से सीधा 1.2 लाख, देन 1.4 लाख. तो मोर और लेस अगर ये 1 लाख से 1.2 तक भी है, आई एम ओके विथ इट. ओके, बिकॉज यू नो वी आर इन द बिजनेस ऑफ नॉन-डायरेक्शनल ट्रेडिंग. हियर द ओनली थिंग दैट वी वर्क दैट help us to survive is management, is adjustment, और adjustment होगा तो ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा. that's more or less simple thing. Okay, simple maths. So yeah, this is the summary about everything. and हाँ, one more thing is there. अभी क्या है ना कि मैं जैसे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट देता रहता हूँ for each and every day how I traded and what all is happening live. I give commentary. Okay, और वहाँ पे जब मैं PnL स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ तो इट इज़ मेकिंग सम कन्फ्यूजन अमंग पीपल कि कुछ समझ में नहीं आ रहा. लाइक हियर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाई इट इज शोइंग 33K, और क्या मैं 33K का लॉस बुक किया आज? नो, इट इंक्लूड दिस कवर्ड कॉल ऑल्सो. तो आई एम थिंकिंग कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ the covered call that I will be taking will be on in any other account. Okay, not in these accounts, so that it will be fresh. And at the same time, see, out of one more thing to add, जो ये यहाँ पे मैंने प्रॉफिट दिखाया 16.5% टोटल, इट इज एक्चुअली 17.5%. ओके, 1% मैंने कवर्ड कॉल में लॉस लिया है, और अभी भी 1% का लॉस कवर्ड कॉल पे चल रहा है. सो out of total 20% profit that I'm booking here, that I'm seeing here, okay, in investment, so out of that 2% has gone in adjustment in portfolio safety, okay, security. So that's completely fine with me. But yeah, this is also added here, okay, which should not be there, because this journal is especially for my trading purpose. Okay, this is my trading journal. Here I'm just showing you what return I am making जस्ट आउट ऑफ ट्रेडिंग, नॉट आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा मैं जब ईयरली समरी बनाऊंगा तो उसमें मैं उसे ऐड करूंगा. सो मोर और लेस दिस वाज द समरी फॉर द डे, एंड आई होप एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू it made sense to you, and at the same time I tried my level best to explain every bit about last month and every bit about how everything is going on and what changes and tweaks I'm thinking of that I'm going to explain in live trading videos that I will be putting. Okay, so I will continue with that. So yeah, that's it for me, and I hope everything that I'm telling you in my live trading videos and in here you are learning something from them. And if you do, then please do like and subscribe to the channel. Thanks a lot. And